टॉपिक है कनेक्शन एंड कास्ट पार्शियल डेंचर्स माइनर कनेक्टर्स और मेजर कनेक्टर्स क्या है इंडिकेशंस क्या है टाइप्स क्या है ये सारी चीजें ठीक है अब कनेक्टर्स क्या है द पोर्शन ऑफ द रिमूवल पार्शियल डेंचर दैट यूनाइट्स द कंपोनेंट्स ठीक है अब इसमें कौन सा है मेजर कनेक्टर डिफरेंट आर्चेस डिफरेंट क्रॉस आर्च कनेक्शन माइनर कनेक्टर्स का जो कंपोनेंट्स जैसे क्लास असेंबली है उसको जो ना आपके मेजर कनेक्टर के साथ कनेक्ट करता है या बेस के साथ कनेक्ट करता है ठीक है सारों को कनेक्ट जो चीज कर रही है एक साथ जोड़ रही है उसको मेजर माइनर मेजर कनेक्टर serves as the principal method for connecting opposing sides of the removable partial denture जो भी बात की है minor connector smaller components to the major connector मेजर कनेक्टर के साथ क्लास असेंबली या कुछ सेटअप या जो भी आपने बनाया है उसको कनेक्ट करना अब पैरेलल स्ट्रैप है ये एग्जांपल है ये है माइनर कनेक्शन कनेक्टर्स प्रॉक्सिमल प्लेट्स रेजन रिटेनिंग एलिमेंट्स ठीक है ये रेजन रिटेनिंग एलिमेंट्स है ये डी वाला यहाँ पे एक्रिलिक आके पोर होगा उसमें कुछ स्ट्रक्चर आएगा ये माइनर कनेक्टर्स है ठीक हो गया ये माइनर कनेक्टर है ये इसके साथ जो कनेक्शन की हुई है ऑफ दी रेसिप्रोकेटिंग आर्म ठीक है माइनर कनेक्टर्स इसके साथ अटैच हुए ये आपका मेजर कनेक्टर है लिंगुअल जो बाहर आई हुई है और ये जो माइनर कनेक्टर जो रेसिप्रोकेटिंग आर्म्स आपने एडिशनल इनडायरेक्ट रिटेंशन के लिए दिए हुए हैं वो आपके माइनर कनेक्टर पैलेटल बार एक सिंगल बार आपके पैलेट के ऊपर ठीक है ये नैरो है लेस देन 8 मिलीमीटर्स हाफ ओवल इन क्रॉस सेक्शन थिकेस्ट पॉइंट सेंटर में है gently curved and should not form a sharp angle at the junction of the denture base. Indicated for short span Kennedy class 3. Kennedy class 3 short span है तो यानी कि दो सिर्फ यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे दो दांत मिसिंग है शॉर्ट स्पैन है तो इसमें आप Kennedy class 3 ठीक है पैलेटल स्ट्रैप पूरे का पूरा फ्लैट ठीक हो गया एंटीरो पोस्टीरियर पैलेटल स्ट्रैप इंटीरियर स्ट्रैप है पोस्टीरियर बार है इंटीरियर साइड पे स्ट्रैप है पोस्टीरियरली बार the palatal bar must be avoided and is used if there is no alternative अगर और कोई alternative नहीं है तो फिर हम palatal bar यूज करते हैं वरना strap काफी होना चाहिए और shoe shape है thin band of metal ये वाला जो है running along the lingual surface of the remaining teeth extending into the palatal tissues for 6 to 8 millimeters medial borders of the connectors is placed at the junction of the horizontal and vertical slopes of the palate indicated when several anterior teeth are being replaced and palatal torus. Palatal torus is anterior multiple teeth. Horseshoe major connector has the tendency to flex and deform when load is applied. Rigidity can be increased by extending the border slightly into the horizontal surface of the hard palate or thicker metal crossing the anterior palate. Anterior posterior palatal strap, आगे भी strap है, पीछे भी strap है. Complete palatal coverage है. Types of mandibular major connectors आपकी lingual bar आ गई. हाफ पेयर शेप लिंगुअल बार पैटर्न है इसमें ठीक है 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर राउंडेड आफ्टर बीइंग कास्ट इन मेटल नोटिस द रिलेशनशिप विद द फ्लोर ऑफ द माउथ से ऊपर ही है सबलिंगुअल बार आ गई आपकी नोटिस द रिलेशन फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ साथ ही indicated when there is less than 7 millimeters of space from the free gingival margin to the floor of the mouth lingual plate is contraindicated lower frenal attachment allows for its placement ठीक हो गया ये लिंगुअल प्लेट है राउंडेड है लिंगुअल प्लेट फ्लैटन है और राउंडेड आफ्टर बीइंग कास्ट कंटिन्यूअस बार सिंगुलम है कंटिन्यूअस विद सिंगुलम के ऊपर से आती है डबल लिंगुअल बार है कैनेडी बार है ठीक है कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस बार जो आपकी सिंगुलम के साथ आ रही है and indicated for case of open embrasures. Embrasure areas अगर सेंटर के अंदर खुले हुए हैं तो उसमें आप देखते हो labial bar साथ में आपने labial retentive arms दिए हैं ठीक हो गया अब types of major connectors maxillary major connectors palatal bar palatal strap ये सारे lingual bar sublingual double lingual bar single bar labial bar minor connectors क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं जो क्लास असेंबली को मेजर कनेक्टर के साथ जोड़ेगा जो इनडायरेक्ट रिटेनर्स को ऑक्सिलरी रेस्ट के साथ denture bases to major connectors serve as an approach arms of vertical projection bar type clasp minor connectors that join class assembly to major connectors
क्लास असेंबली को मेजर कनेक्टर के साथ ज्वाइन करा, ये आपका माइनर कनेक्टर आ गया. Minor connectors that join indirect retainers or auxiliary rest to major components. Auxiliary rest आपके लिए नहीं है, मेजर कनेक्टर के साथ ज्वाइन करेगा आपका वो वाला. Minor connectors that join denture bases to major connectors, ये वाला open construction. Mesh construction है, beads in metal base है, या आपके open construction. Mesh work, open construction, beads on metal. Minor connectors that serve as approach arm from vertical projection clasp, ये वाला जो connection है बीच में approach arm में जो आ रहा है. अब minor connectors के design principles क्या हैं? Minor connectors except for horizontal approach arm must be rigid. Horizontal approach arm के अलावा बाकी सारे rigid. Horizontal अगर नहीं होगा rigid, अगर rigid होगा तो वो horizontal forces ज़्यादा apply करेगा on the tooth, जिसकी वजह से dislocate दांत हिल जाए, ना हिलू. Minor connectors are responsible for the distribution of applied forces to the supporting teeth and oral tissues. Minor connector that joins the clasp assembly to the major connector must be broad, buccolingually, then thin mesiodistally. Buccolingually broado, mesiodistally thin. This allows the minor connector to be strong yet does not interfere with the prosthetic tooth placement. The proximal plate minor connector, the proximal contact is about 1/2 of the distance between the tips of the adjacent buccal and lingual cusp of the abutment teeth. कहाँ पे है proximal plate minor connector की? 1/2 the distance between the tips of the tip of the adjacent teeth. 1/2. ठीक है? Viewed from above, it is a triangular at the apex. Apex के ऊपर triangular है. ऊपर कोई triangular shape आ रहा है. Being located buccally and the base of the triangle being located lingually. Base of the triangle lingually है, buccally आपका tip है. Less interference with the arrangement of the adjacent artificial tooth is encountered with minor connectors associated. Minor connectors ऐसे बनाओगे तो adjacent teeth जो बना रहे हो उसमें जो prosthetic दांत लगा रहे हो उसके साथ interference कम होगी, ज़्यादा grind नहीं करना पड़ेगा जब place करोगे. Junction of the major and minor connectors should be gently curved to prevent the stress concentration and promote patient comfort. ये वाला जो है curved, ये triangle आ रहा है और ये curved भी है, ठीक है? The minor connectors should cross the gingiva at 90 degrees to minimize tissue coverage. 90 degrees के ऊपर आ रहा है, direct line 12 ये सीधा flow है. The minor connector is located in the embrasure space. In the embrasure space, the minor connector is tapered to the tooth to avoid the bulk. दांत के हिसाब से taper करते हैं to avoid the bulk to accommodate the tongue. The deepest part of the interdental embrasure should have been blocked out to avoid interference during placement. यानी कि जब ये place करें तो ये तंग ना करे जो भी आपने minor connector लगाया हुआ है. यहाँ पे निकालते हुए और वापस लगाते हुए interference कम. Blocked out, avoid interference during placement and removal and avoid any wedging effect of the contracting. अब इस तरह की चीज अगर बनी हुई है दांतों के बीच में प्लेस करोगे तो वेज के तौर पे एक्ट करेगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए ब्लॉक आउट करते हैं. ब्लॉक आउट होता है प्लास्टर पोर करके थोड़ा सा उसको सरफेस को फ्लैटन कर देते हैं बिफोर प्लेसिंग या कोई भी वैक्स अप करने से पहले जो डिजाइन में है. स्मॉल विंडोज अवॉइड करनी है. एक्सेप्टेबल विंडो डायमेंशन क्या है आपकी? मैक्सिला for gingival margin health, AB must be at least 5 millimeters, A window 5 millimeters, and CD must be at least 10 millimeters. ठीक हो गया. Mandible के gingival margin health है minor connector और उसके बीच में जो distance आ रहा है AB must be at least 3 millimeters. ये distance 3 millimeters का हो connector के और उसके दांत के बीच में, and CD must be at least 10 millimeters. ये 10 millimeter width हो, 3 millimeter आपके surface distance हो. Maxilla में 5 millimeter at least. The maxilla, the minor connectors should extend beyond the most prominent portion of the tuberosity in the maxilla. The maxilla की most prominent tuberosity उसके beyond है. In case of mandible, minor connectors should be 2 2/3 lengths of the edentulous ridge. 2/3 आपकी edentulous ridge की maximum tuberosity ये है ना, तो उसके आगे 2/3 होनी चाहिए. ये आपने involve नहीं करना.
The cast stop is essential to prevent displacement and deformation of the metal framework during the raise and packing procedure. Pointy, pointy surface. The cast stop projection from the tissue surface of the minor connector to contact the dental cast. अब review of lab steps to understand the importance. ये आपने surveying कर ली, surveying करने के बाद आपने इसके ऊपर सारी जो डिजाइन फीचर्स आपने बनाने हैं, ये कोई भी गाइड प्लेन्स बनानी है, वो बनाने के बाद आप उसको वैक्सअप करते हो. वैक्सअप करने के बाद प्लेसमेंट है. वैक्सअप के बाद कास्टिंग हो रही है. कास्टिंग होने के बाद आपकी ट्रायल पीरियड होता है जिसमें पेशेंट के मुंह में प्लेस करके देखते हो उसको कि सही तरह बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा. ये कास्ट मैश है. ये आपने जब इम्प्रेशन लेके सारा प्लेस कर दिया तो इम्प्रेशन में आपने हार्ड प्लास्टर में इसको एम्बेड करवा दिया. ये फ्लास्किंग वाले प्रोसीजर में आ जाएगा सारा. ठीक है. कोटिंग की है, साथ में प्लेसमेंट है, अटैचमेंट है. इंटरनल एंगल्स ऑफ द इंटरनल फिनिश लाइंस मस्ट प्रोवाइड अ बट जॉइंट. ये वाला जो है बट जॉइंट 90 degrees for acrylic resin attachment. Acrylic resin or cast mesh में 90 degree का angle. Internal angles of the external finish line should be slightly less than 90. External finish lines are feel less than 90, लेकिन internal line angles should be 90. But right. Internal versus external finish lines. Properly contoured relief wax resulted in sharply defined internal finish line. Or when possible, external finish line should follow an arc established by the lingual surface of the remaining teeth. How internal finish lines are formed? Surveying करके सारा कुछ करके आपने flatten करना है. Wax up पे जो भी काम करोगे वो आपका follow up होगा on the pattern itself. External finish lines. The junction of the major connector and the minor connector at the palatal finish line should be at least 2 millimeters. Junction है palatal finishing line और minor connector के 2 millimeter के medial from the imaginary line that would contact the lingual surface of the position. ठीक है. फिनिश लाइंस आपने 2 मिलीमीटर देनी है. ये ठीक आ रहा है, ये इनकरेक्ट आ रहा है. Finishing line versus beading. Bead lines are created by scribbling shallow channels on the surface of the cast before duplication of the investment material. इस तरह करके आप shadow बनाते हैं beading. ये वाली चीज बन जाती है. Structural requirements maxillary major connectors की क्या है? Rigid होनी चाहिए. Borders may placed minimum 6 meters from gingival margin. 6 millimeter आपके gingival margin से दूर हो. Extended onto the lingual surface of the teeth. Borders run parallel to the gingival margin. जो borders हैं वो parallel to the gingival margin. Gingival margins should be crossed at right angles. Relief is provided if necessary. Usually this relief is not required when the teeth are tilted quickly. Borders of the maxillary major connector should always cross the palatal midline 90 degree. Border जो है 90 degree पे हो. Coverage of the tori should be avoided if possible. अगर torus है तो उसके ऊपर coverage नहीं देनी, उसको avoid करना, या तो surgically इसको remove कर देना. The anterior border of the maxillary major connector should not end on the anterior slope of the prominent ruger. Prominent ruger के anterior slope पे ना हो, उसके posteriorly रखें. This produces a noticeable prominence that may interfere with the patient's comfort and speech. The anterior border of the major connector should be terminated on the posterior slope of a prominent rugae. यानी कि ये rugae जो है, जो soft tissue enlargement है, उसके posterior surface पे terminate करना है, उसके आगे तक लेके नहीं जाना क्योंकि interfere करेगा बात करते हुए patient के. The anterior border of major connector terminated in the posterior slope of the prominent rugae. In this manner, the edge of the prosthesis may be blended with the existing soft tissue contours. All borders should taper slightly towards the underlying soft tissue. Taper करेगा soft tissue के हिसाब से. For those major connectors that present open central areas, the medial borders should be positioned in the junction of the horizontal and vertical surfaces of the palate. Medial borders position कहाँ रखना है? Junction है of horizontal and vertical surface of the palate. Palate के horizontal, vertical. ये horizontal, vertical. The metal should be smooth but not highly polished on the tissue surface.
ज़्यादा पॉलिश नहीं करना टिश्यू सरफेस, रिटेंशन पे इफेक्ट आता है। All borders that contact the soft tissue should display bead lines. The bead lines should become less distinct as they approach the gingival margins of the teeth. They are less prominent areas of the mucosa. A posterior border must never cover the movable soft palate. Posterior border आपने soft palate पे बिल्कुल नहीं चला जाना, terminate पहले कर देना। Indication maxillary major connectors की क्या है? If the periodontal support of the remaining teeth is weak, more of the palate should be covered. A wide palatal strap or complete palate is indicated if the remaining teeth have adequate periodontal support and little additional support is needed. A palatal strap or anterior posterior palatal strap may be used. For long span distal extension bases where rigidity is critical, an anterior posterior palatal strap or complete palatal is indicated. Long span है distal extension की palatal strap or complete palate is indicated. Anterior teeth जब replace करो, ये सारी चीजें हैं जो आपके conditions हैं, indications हैं major connectors की, वो ये है. Anterior teeth जब replace करोगे, anterior posterior palatal strap, complete palate या horseshoe major connector use करोगे. Final selection must be based on modifying factors such as number and location of missing posterior teeth, periodontal support of remaining teeth, and type of posing. अगर torus present है, not to be and remove नहीं करना, anterior posterior palatal strap दोगे, anterior posterior palatal bar या horseshoe major connector use करोगे. Final selection modifying factors के ऊपर depend करता है. Horseshoe connector should be used very sparingly. Flexure of this major connector may permit concentration of forces upon individual teeth or localized segments of the maxillary arch. Palatal bar rarely indicate होती है. Structural requirements major connectors को जोड़ने के लिए क्या है? Must be rigid without being so bulky so that compromise patient before patient comfort. Beading is not done under mandibular major connectors. Borders must be placed minimum 3 millimeters from the gingival margin or extended to the lingual surface of the teeth. अब distal extension के लिए क्या है? Remove partial denture. Moderate amount of relief may be indicated because this type of prosthesis tends to rotate during function. अब ये घूमेगा तो थोड़ा बहुत आपने tissue surface और denture में relief देना है ताकि आपके वो gums को hit ना करे. If lingual soft tissues are vertical or nearly vertical, minimum relief required. अगर vertical है या minimum required relief है, लेकिन horizontal है थोड़ा सा lingual tissues तो फिर आपको relief देना पड़ेगा क्योंकि forces जब पड़ेंगे तो pinch करेगा और pulses cross करेगा. Require greatest amount of relief because any movement in the major connector will bring it to contact with adjacent soft tissue. For entirely tooth-supported prosthesis, little or no relief is needed because the denture does not tend to move. Mandibular major connector की indication क्या है? Tooth supported removable partial denture. The lingual bar normally is the mandibular major connector. Tooth supported है तो lingual bar. When insufficient room between floor of the mouth and the gingival margins 8 millimeter, lingual plate should be used. Plate use करोगे जब 8 millimeter से कम आपके tooth surface और floor of the mouth के ऊपर जगह है. Lingual plate major connector is indicated for patients with inoperable tori and patients with high lingual frenum attachment. Frenum ज़्यादा high है lingual तो इसमें आप lingual plate दोगे. जब anterior teeth reduced periodontal support and requires stabilization, lingual plate is required. जब lingual support चाहिए आपको और additional तो plate आप दोगे. When the anterior teeth exhibit reduced periodontal support, large interproximal spaces, modified lingual plate, यानी step back design or double lingual bar should be used. When a removable partial denture will replace all mandibular posterior teeth, lingual plate should be used. Plate का भी use करनी है जब आपके posterior दांत सारे आपने replace करना है. Labial bar is rarely indicated. अब lingual bar किस तरह दिखता है, क्या चीज है? 3 से 4 मिलीमीटर फ्री gingival margin से दूर, 4 से 5 मिलीमीटर वाइड है, हाफ पेयर आधा नाशपाती का शेप होती है इसकी. Broad portions of the bar is located inferior, यानी कि जो मोटे वाला portion है वो inferior border पे located. If additional rigidity desired है, thickness of the bar may be increased during wax up procedure.
थिकनेस आप इंक्रीज कर लो एक्सेप्ट के दौरान। अब एंटीरियर लिंगुअल स्पेस कैसे करते हो आप? पेरिडोंटल प्रोब के साथ कर लेते हो। आस्क द पेशेंट टू टच द vermilion border of the upper lip with the tip of the tongue. Measure the distance using periodontal probe. Mark the distance on the cast. Periodontal probe के साथ करना है और फिर आपने उसको ट्रांसफर करना है कास्ट के ऊपर। एडवांटेज लिंगुअल बार का क्या है? सिंपल डिजाइन है, मिनिमल टिश्यू कवरेज है। डिसएडवांटेज डिफिकल्ट टू मेंटेन रिजिडिटी इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। सीडिंग गम्स हो रही है, डिक्रीज स्पेस फॉर बार है, हाई फ्रीनल अटैचमेंट है, हाई मसल अटैचमेंट है, टोरल प्लेसमेंट है, इसमें इश्यू कॉज होता है। लिंगुअल बार की तरह लगता है इन लोअर हाफ पेयर शेप विद एक्सटेंडिंग थिन शीट इनटू द टीथ। हाफ पेयर शेप है और थिन शीट है जो एक्सटेंड कर रही है। Lower border is broad and rounded and is in contact with the floor of the mouth. नीचे वाला portion है rounded है, contact में है। Superior border is scalloped, ये scallop हुआ हुआ with the teeth above the cingula. Posterior border must completely close the interproximal spaces to the level of the contact points. Contact points तक पूरा coverage देनी है। Step backs कहाँ पे use करते हैं? जब patient के जो ना open impressions है। यहाँ पे देखो closed impressions थे, contact में है तो आप ये वाली चीज use करोगे। Open impression में step back है, ये वाले empty spaces रखोगे impression area में। Open impressions, anterior teeth are widely spaced, add to the thickness of the lower border and increase rigidity. Thickness increase करोगे तो rigidity increase कर जाएगी। Lingual plate must be well supported by adequately designed rest at the two ends. Rest आपने देने हैं अच्छे खासे दोनों साइड पे। The interdental extension must be so designed to prevent wedging. ये ना हो कि ये जो आपने अंदर प्लेस किया हुआ है वही दांत को आगे पुश करना शुरू कर। Advantages lingual plate के क्या है? Used in cases where there is insufficient space for lingual bar. Used when anterior teeth are periodontically compromised. Such cases, major connector can sprint the teeth, दांतों को hold करके रखेगा. New artificial teeth can be added onto this major connector, and it contributes to indirect retention, can be used in overall small to medium sized tori, and it is very rigid. Disadvantage kya hai? May cause damage to the underlying hard and soft tissues in patients with poor oral and prosthetic hygiene habits. Demineralization of the caries of the dental tissues and irritation and inflammation of the soft tissue that might lead to periodontal break. Mid-palatal strap description 8 mm से कम कभी नहीं होता. Increase as the dentures area increases, rigidity may be increased by thickening the central portion up to 1.5 millimeters तक आप increase करते हैं. Thickness center में ज़्यादा होती है इसकी. Anterior border of the major connector should be positioned posterior to the palatal rugae. Palatal rugae के posterior पे anterior border, posterior to the rugae, soft palate से आगे. If not possible, the anterior border should be terminated at the posterior slopes of the prominent ruga. Posterior border of the major connector should be positioned anterior to the junction of the hard and soft palates. Advantage: greater resistance to bending and flexing, can be kept thin and well accepted by patients. Disadvantage: uncomfortable जब ज़्यादा उसका मोटाई होती है, broad ज़्यादा होता है. Papillary hyperplasia is commonly seen in patients with poor oral hygiene. If this connector covers a major area of the palate and can be avoided by appropriate patient education. Oral hygiene देखनी है. Anterior posterior palatal straps. Anterior posterior straps no less than 8 millimeters in width. Open areas of the palatal region should be 20 to 50 mm. Border be at least 6 millimeters. Borders आपके 6 millimeters के हों. 8 millimeters width होनी चाहिए. Posterior border must not cover soft palate. Soft palate पे ना जाए. Can be made as thin up to less than 1 millimeters if covered in rugae. Rugae का cover करा तो 1 millimeter thickness भी आप रख सकते हैं. Advantage क्या है? Rigid है, can be made thin, can be used in palatal tori. Disadvantage: covering rugae may affect speech of some patients. Speech affect करोगे अगर आप rugae को हाथ लगाओगे. Palatal plate most rigid, covers all of the palate. Posterior palatal seal must not be used. Posterior palatal seal नहीं use करनी. Feeding can be used to enhance retention by addition of cohesive forces.
A partial cast palate connects different edentulous spaces and extend posterior to the junction of the hard and soft palates. Complete cast plate, anterior cast plate. Advantage: broad tissues cover makes it advantageous in clinical situations where greater palatal support is needed. A broad tissue cover makes it more advantageous in clinical situations than greater palatal support is needed. A long span posterior saddles are periodically compromised abutments, clenches, bruxes, minimal ridge height. Does not affect phonetics as it is in thin and replicates anatomical contour. Enhanced thermal conductivity, enhanced polished surface reduces chances of candida albicans. Acrylic is porous and serves as a very good reservoir for candida. Disadvantage: broad tissue coverage accompanied by poor hygiene habits may cause soft tissue irritation, papillary hyperplasia. Phonetics may be affected in cases when the connector is wrongly extended into the soft palate.